I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening, everybody. Good evening, everyone. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. सभी लोग फटाफट आ जाओ. सभी लोग फटाफट आ जाओ. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Everybody please join. I hope I am audible to you. Everybody. I hope I am audible to you. Everybody. I hope I am audible to you. Everybody join the lecture. Everybody join the lecture. Yes, Devesh Radekar, thank you. Okay. So today we'll see the anticholinergic drugs. So before that, what we have seen yesterday, I would like to explain you. So yesterday we have seen this physiological pharmacology of acetylcholine we have seen. So then we have seen the esters of choline, synthetic esters of choline like carbachol, bithanacol and all that. Then we have seen the actions of muscarine and all that. We have seen the indirectly acting cholinergic drugs like reversible and irreversible cholinesterase inhibitors or anticholinesterase. We have seen the poisoning known as organophosphate poisoning. We have also seen organophosphate poisoning. We have seen the actions of your indirectly acting or cholinomimetic alkaloids. Also we have seen physotigmine, neostigmine, pyridostigmine, ammonium, etc., etc. After that we have seen the organophosphate poisoning, irreversible anticholinesterase, organophosphate poisoning, right? This was our last slide. So we have already seen organophosphate poisoning. What will it do? So organophosphate, they are the highly lipid soluble compounds. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो फार्मर्स अपने क्रॉप के ऊपर पेस्ट कंट्रोल के लिए वो अपने क्रॉप के ऊपर इसके स्प्रे करते हैं. सो फार्मर्स यूज टू स्प्रे these pesticides on a crop to prevent the pest. So all they are the lipid soluble, highly lipid soluble molecules, and they can easily get absorbed through skin, right? So while spraying, what happens sometimes, इंडिया में तो मालूम है आपको कि लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते. lot of people they are not aware about this, right? So when even my father used to work in the field, my father used to spray pesticides. So they used to spray just by wearing undergarments. So what happens sometimes, if wind direction comes opposite to you against that spray, that spray will come to your face, on your skin and all that. So that pesticide may get absorbed into systemic circulation and there might be poisoning. So we have seen the poisoning of organophosphate. Remember, antidote is nothing but the pralidoxime, so which is a cholinesterase reactivator. Cholinesterase reactivator, right? So cholinesterase reactivator is a pralidoxime, right? तो पेस्टिसाइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, दूसरा होता है कार्बामेट. We have already seen this. Now today we'll see the next part. So I already told you about this mydriasis and meiosis. So how there is a mydriasis, how there is a meiosis. So sympathetic nervous system or stimulation of adrenergic nervous system, that causes the
mydriasis. देखो कैसे, so adrenergic stimulation, right? So there is a release of adrenaline or noradrenaline. So what noradrenaline will do? Noradrenaline will constrict these radial muscles. Noradrenaline constrict or will cause contraction of these radial muscles, and this lens, the size of lens will be increased like this. The size of lens will be increased, known as a mydriasis. So noradrenaline causes the mydriasis, means sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation causes the mydriasis in the eyes, right? Due to constriction of radial muscle. ये जो black part है आपका, that is known as a pupil. Black part is pupil, and this is known as a radial muscles. So the lines, they are known as the radial muscles, and in between that dark black color and radial muscle, so whatever white patch is there, they are known as the circular muscles. Now constriction of radial muscles will increase the size of pupil, that is known as a mydriasis. So sympathetic stimulation or noradrenaline or sympathomimetic drug, what they will do, they will cause mydriasis. Now acetylcholine or parasympathetic nervous system has opposite effect. Parasympathetic stimulation means acetylcholine. So acetylcholine by acting on a muscarinic receptor that is present in the radial, okay, that is present in the circular muscle, that is present in the sphincter muscle or sphincter pupil बोलते हैं इसको. So that is present in the sphincter muscle, so causes the constriction via hormone receptor. So acetylcholine constrict the sphincter pupillae muscle, and that's why it causes the, okay, ये constrict करता है, that's why it causes the meiosis. You can see pupil size is decreased. So parasympathetic stimulation will cause meiosis, है ना. Parasympathetic stimulation or acetylcholine will cause meiosis. Parasympathetic stimulation or release of acetylcholine will cause meiosis. Pinpoint pupil का size कम करेगा acetylcholine. Adrenaline, noradrenaline ना, sympathomimetics क्या करेंगे, pupil का size बढ़ाएंगे, and noradrenaline will increase the pupil size. Distance will be set for longer vision, है ना, मतलब दूर का आपको अच्छे से देगा. Under the influence of sympathetic nervous system, you are able to see the objects which are far, है ना, which are far, and under the influence of parasympathetic nervous system, you are able to see the objects clearly which is near, not far, है ना. So meiosis prepares your eyes to see the nearer objects. That means meiosis result in the, है ना, meiosis result in the near vision, mydriasis result in the far vision, right? And there is one more, है ना, there is a your eyes lens. आपका जो आई है उसका जो लेंस है, your lens of eyes, they are connected with the muscles known as the ciliary muscle or ciliary muscle and ligament, suspensory ligament, right? On a ciliary muscle you have muscarinic receptor, right? Okay. Now meiosis, because of the constriction of ciliary muscle, so acetylcholine causes the spasm of, okay, causes the spasm of accommodation, causes the spasm of accommodation. Mydriasis, meiosis, that causes spasm of accommodation. So constriction of ciliary muscle by acetylcholine, जो acetylcholine है वो ciliary muscle का constriction करता है, and लेंस का जो है, लेंस का जो फ्लैट लेंस है आपका, वो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लैट होता है, एंड दैट इज नोन एज अ स्पाज्म ऑफ एक्कोमोडेशन. यू आर नॉट एबल टू सी द फार डिस्टेंस, है ना. दैट्स व्हाई रिमेंबर एसिटिलकोलिन कॉजेस मायोसिस, एड्रेनालिन कॉजेस माइड्रियासिस. ठीक है. नाउ जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है वो भी माइड्रियासिस करेंगे, जो सिंपैथोलाइटिक ड्रग है वो मायोसिस करेंगे, जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है तो वो मायोसिस करेंगे, राइट. दिस वन इज नोन एज मायोसिस. ये क्या है कि मायोसिस, इन पॉइंट विल, राइट, मायोसिस. सो सिंपैथो, देखो एसिटिलकोलिन कॉजेस मायोसिस, सो ड्रग व्हिच आर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स they will also cause meiosis, right. Now drugs which are parasympatholytics, so anticholinergic drugs है, so those drugs which will block the acetylcholine, so obviously they will cause mydriasis.
है ना, बिकॉज एसिटिलकोलिन का काम क्या है कि मायोसिस करना, पिन पॉइंट पिपिल बनाना। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा फिर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा उसके ऑपोजिट, सो इट विल कॉज माइड्रियासिस, राइट। तो लाइकवाइज दैट यहाँ पे देखो, सो adrenergic stimulation causes the mydriasis, so sympathomimetic drugs they will cause mydriasis, but what sympatholytic drugs will cause, तो जो नॉरएड्रेनलिन को ब्लॉक करने वाले ड्रग है, सो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग दे विल कॉज मायोसिस, राइट, दे विल कॉज मायोसिस। तो इतना सिंपल होता है और बच्चे को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन, actually there is no need to get confused because it is very simple. Once you understand the normal physiological effect of adrenaline, that is the sympathetic nervous system, so you will understand the sympathomimetic drugs what they will do, you can understand the sympatholytics drug what they can do. If you understand the normal effect of acetylcholine, that is the parasympathetic nervous system, so like it causes the meiosis, है ना, parasympathetic nervous system में अपन देखा है कि acetylcholine causes the meiosis। तो जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है डायरेक्टली एक्टिंग इनडायरेक्टली एक्टिंग वो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली मायोसिस करेंगे। एंड दोज ड्रग विच आर एंटीकोलिनर्जिक्स, जो ड्रग एसिटिलकोलिन के एक्शन ब्लॉक करते हैं वो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल कॉज माइड्रियासिस, राइट। जैसे एसिटिलकोलिन हार्ट के ऊपर क्या करता है कि इट विल डिप्रेस योर हार्ट, इट विल डिप्रेस योर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट विल डिप्रेस द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी। तो जो भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होगा that will also do same thing. So parasympathomimetic drugs, they will also depress the heart, they will also decrease the conduction velocity, force of contraction, heart rate. But what parasympatholytic drug will do, so it will block the actions of acetylcholine, means that will produce opposite effect. So that's why atropine will causes increase in the heart rate, tachycardia, right. So we'll see it again, don't worry. Now today we'll see the cholinergic drugs simply. So classification of parasympatholytics means what, cholinergic, parasympatholytic मतलब क्या है, mimetic मतलब क्या है, so parasympathomimetic means they will copy the action of parasympathetic nervous system or they will copy the action which are produced by acetylcholine. Parasympatholytic means what, lytic में है ना, दो होता है यहाँ पे, there are two words, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है mimetics, there is one word known as a mimetics, there is one word known as a lytics. Now mimetic means what, mimetics मतलब copy, mimetic मतलब copy, lytic मतलब क्या, breakdown, lytic मतलब क्या, breakdown. So breakdown मतलब, so those drug which is a mimetic, what will it do, it will copy the action, this is sympathomimetic, so they will copy the action produced by noradrenaline. Lytic means what, they will break down or they will antagonize, lytic means they will antagonize. जैसे for example adrenolytic मतलब क्या, those drug which will block the actions of adrenaline or noradrenaline. Parasympathomimetic means what, so those drug which will copy the action of parasympathetic nervous system or acetylcholine. Now है ना, cholinergic मतलब क्या है, so drug which will block the actions of acetylcholine. So right, so parasympathomimetic, parasympatholytic, है ना, sympathomimetic, sympatholytic, है ना, और है ना पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को अपन बोलते हैं कोलिनोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक को अपन बोलते हैं कोलिनोलाइटिक, है ना। सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब क्या है, एड्रेनर्जिक, एड्रेनोमाइमेटिक, एंड है ना, पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब क्या है, एंटी एड्रेनर्जिक, है ना, और एड्रेनोलाइटिक, सो दे आर जस्ट अ प्ले ऑफ टर्म्स, टर्म्स का प्ले रहता है, बाकी कुछ नहीं। नाउ विल सी classification of parasympatholytic means those drug which will antagonize the acetylcholine actions, particularly the muscarinic effect, because acetylcholine has a two receptor, acetylcholine का receptor कितना है, there are two receptor, muscarinic receptor and nicotinic receptor, दूसरा है आपका nicotinic receptor, there are two receptors of acetylcholine. So cholinergic or parasympatholytic means what, these are the drug which will block muscarinic receptor also and nicotinic receptor also, but here parasympatholytic means those drug which will block the muscarinic receptor, those drug which will block the muscarinic receptor, है ना, and those drug which will block the nicotinic receptor, they are known as ganglionic blockers, they are known as a ganglionic blockers. ये सब क्या है, ganglionic blockers है. These ganglionic blockers will see tomorrow
because tomorrow we are going to see a muscle relaxant chapter. So all muscle relaxants, they are nothing but the ganglionic blocker. ये क्या है? muscle relaxants. So cholineolytic means most of the actions on a muscarinic receptor, है ना, muscle relaxant, यहाँ पे muscle relaxant है. So those drug which will block the nicotinic receptor, they are nothing but the muscle relaxant, and those which will block the muscarinic receptor, they are mostly called as a parasympatholatic. यहाँ पे parasympatholatic. So today we are going to see parasympatholatic. So atropine and related drugs, we'll see their pharmacological effect, their uses and all that. So I hope I am audible to you clearly. तो देखो पहला है classification of parasympatholaitics. So those drug which will block the acetylcholine, which will block the muscarinic receptor of acetylcholine, M receptor. So in that first class, natural alkaloids. So natural alkaloids, so they are nothing but the atropa alkaloids. So atropine is there, scopolamine is there. They are the naturally occurring alkaloids which will block the muscarinic receptor of acetylcholine. So that's why they are known as a parasympatholatic, right? So and okay, simply atropine is an anti-muscarinic because muscarinic receptor को block करता है. Then semi-synthetic derivative of atropine, semi-synthetic derivative of atropine because of its Watt's action. So semi-synthetic derivative are prepared. So homotropine, atropine mononitrate, ipratropium bromide, mostly used in the asthma, ipratropium bromide, tiotropium bromide, so again used in the asthma. Then synthetic anticholinergics, synthetic muscarinic blocker, ये सब muscarinic receptor के ऊपर ही act करेंगे. So first one is a mydriatics. So mydriatic, okay, synthetic derivative mydriatic. So in that you have cyclopentolate. यहाँ पे example याद रखो, cyclopentolate and tropicamide. Then those which are used as a anti-secretory, anti-spasmodic, है ना. तो देखो muscarinic receptor acetylcholine का कहाँ पे होता है? Muscarinic receptor is present in the eyes. So blocking of muscarinic receptor in the eye leads to mydriasis. So that's why mydriasis and cycloplegia. So that's why mydriatic. Cyclopentolate, tropicamide. Muscarinic receptor of acetylcholine is also present in the GIT. आपके जो GIT होता है, GIT. So in the GIT you have muscarinic receptor that promote the peristalsis. That's why blockage of muscarinic receptor in the GIT leads to decrease the peristalsis, okay, decrease the peristalsis, as well as muscarinic receptor is present in the stomach. Stomach में क्या है? Muscarinic receptor है. So that is related with the release of acid in the stomach. तो ये HCl जो है आपका stomach में, HCl is hydrochloric acid is secreted in the stomach due to stimulation of acetylcholine or due to stimulation of parasympathetic nervous system, है ना. So parasympathetic influence is there. So in the stomach, acid formation. So acidity is one of the reason because of the hyper or overactivation of parasympathetic nervous system. So that's why anti-secretory, anti-spasmodic. So देखो इसमें क्या है? Anti-secretory, anti-spasmodic. So first class is a quaternary ammonium compound. First one is a quaternary ammonium compounds. So in that propanthalline and a propanthalline, oxyponium, glycopyrrolate and a patenzolate, methyl bromide, propanthalline, so mostly used as a anti-secretory agent, propanthalline. Then tertiary amines, quaternary हो गया, then tertiary amines. In that you have dicyclomine. You might have seen this tablet, dicyclomine. Then valethamate and pyrenzepine. Pyrenzepine, propanthalline, telenzepine, they are mostly used as an anti-secretory agent because of their specific effect on the stomach. ये anti-secretory होते हैं. जब अपन anti-ulcer drug देखेंगे उसमें ये आपको drug के नाम आएंगे ना, propanthalline, pyrenzepine, है ना, telenzepine. Now what is dicyclomine? So you might have seen one tablet known as a, एक tablet आता है cyclopam. There is one tablet known as a cyclopam which is nothing but the dicyclomine. यहाँ पे एक tablet आता है, मोस्टली गर्ल्स तो उनके पास रहता ही रहता है वो. डाइसाइक्लोमाइन मतलब क्या है? साइक्लोपाम. तो साइक्लोपाम इज नथिंग बट द डाइसाइक्लोमाइन एंड इट इज अ
एंटीस्पैज्मोडिक, इट इज एंटीस्पैज्मोडिक. एंटीस्पैज्मोडिक मतलब क्या है? ड्रग विच डिक्रीज द स्पाज्म ऑफ योर जीआईटी मसल और एनी स्पाज्म, है ना. तो एंटीस्पैज्मोडिक. डाइसाइक्लोमाइन, देन वेलाथामेट, है ना, पायरेनजेपिन. तो देन वैसोसिलेक्टिव मतलब क्या है? तो वैसोसिलेक्टिव मतलब क्या है? ये ब्लड वेसल के स्मूथ मोशन जो है उसके ऊपर एक्ट होता है. तो वैसोसिलेक्टिव, है ना, वैसोसिलेक्टिव एंटीस्पैज्मोडिक. तो ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट एंड देन टोल्टोरेडिन, है ना. ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट एंड टोल्टोरेडिन, दे आर द वैसोसिलेक्टिव. देन anti-muscarinic or anticholinergic drug which are also used in the anti-Parkinson. So option class D क्या है? Anti-Parkinson. So triaxylphenidil, it is a drug of choice in the drug-induced Parkinsonism. Then procyclidine and biperidine. मतलब क्या है कि anticholinergics और cholinergic और anti-muscarinic drugs are classified. फर्स्ट क्लास क्या है आपका? नेचुरल अल्कलॉइड्स, एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन. सेकंड क्लास क्या है आपका? semi-synthetic derivative of atropine, that is homotropin, atropine mononitrate, ipratropium bromide, tiotropium bromide. तो ipratropium and tiotropium ये mostly अस्थमा में यूज करते हैं. it is used as anti-asthmatic drug. Okay, because acetylcholine क्या करता है? In the bronchi, acetylcholine will increase the bronchial secretion and also constrict the bronchial smooth muscle. So atropine can cause aggravation of symptoms of asthma. मतलब अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ता है एसिटिलकोलिन. तो एसिटिलकोलिन कंस्ट्रिक्ट द ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड डिक्रीजेस द एयरवे and also increases the secretion of bronchi. Now what anticholinergic drug will do? So obviously they will decrease the secretions, they will dilate the bronchi, so it is a desired effect in case of asthma. That's why ipratropium bromide, tiotropium bromide, they are used as anti-asthmatic mostly, right? Then synthetic derivative or synthetic anticholinergic drugs. So depending on their use, some are used as a mydriatic, let's say for example cyclopentolate, tropicamide. Some are used for their anti-secretory and antispasmodic effect in the GIT. So in that you have quaternary compound A, propenthalin, oxyphonium, glycopyrrolate, pipenzolate and methyl bromide. ठीक है, pipenzolate methyl bromide एक ही ड्रग है. Now this glycopyrrolate is a drug used as a pre-anesthetic medication. ये glycopyrrolate यूज करते हैं pre-anesthetic medication में. You might have seen when we were discussing about the anesthesia. तो pre-anesthetic medication में ये glycopyrrolate होता है to decrease the secretions, है ना, to decrease the irritation. Okay? टर्शियरी अमाइंस में आएगा आपका डाइसाइक्लोमाइन, वेलाथामेट, पायरेनजेपिन. तो डाइसाइक्लोमाइन इज अ एंटीस्पाज्मोडिक. वैसोसिलेक्टिव में ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टोरेडिन. तो फ्लेवोक्सेट जो यूट्राइल रिलेक्शन होता है. एंटीपार्किंसन में ट्राइएक्सिलपेंडिल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन. सो विल सी द क्लासिफिकेशन अगेन. यू कैन सी ओवर हियर. सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो कोलिनोलाइटिक और एंटीकोलिनर्जिक्स और those drug which will block the actions of acetylcholine. So actions of acetylcholine मतलब क्या है? So actions of acetylcholine are produced by muscarinic receptor due to interaction of acetylcholine with the muscarinic receptor as well as nicotinic receptor. तो acetylcholine जब muscarinic receptor के ऊपर एक्ट होता है, nicotinic receptor के ऊपर एक्ट होता है, तभी जाके प्रोड्यूस करता है ना actions. So anticholinergic drug means what? So those which are a muscarinic blocker, those which are a nicotinic blocker. So we have seen the muscarinic blocker. Muscarinic blocker क्या है? Anti-muscarinic. तो एट्रोपिन एंड बाकी उनके डेरिवेटिव अपन ने देखा है. नाउ सेकंड इज अ निकोटिनिक एक्शन. सो दोज ड्रग व्हिच ब्लॉक द निकोटिनिक, so they are used as a muscle relaxant. So nicotinic blockers. Tomorrow also we'll see it. Don't worry. कल अपन भी देखेंगे. ये muscarinic. So muscarinic blockers we have seen. Nicotinic blockers in that you have है ना, nicotinic receptor you have two type. In the nicotinic receptor you have two type. So NN receptor is there and NM receptor is there. So NN कहाँ पे होता है? N means nicotinic, N मतलब neuron. So they are present in the ganglia. So those drug which will block the NN nicotinic receptor known as a ganglionic blocker.
known as a ganglionic blocker. They are used in the treatment of blood pressure. They are useful in the treatment of blood pressure. So ganglionic blocker, there is a one separate class on that, जैसे है ना hexamethonium वगैरह वगैरह drugs. So they are used in the treatment of blood pressure. They decreases the blood pressure due to decrease in the sympathetic as well as parasympathetic outflow. गैंग्लिया का आप पता है, गैंग्लिया कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, न्यूरॉन में होता है. दैट्स व्हाई गैंग्लिया इज अ कनेक्शन, इट इज अ जंक्शन. सो blocking of ganglia will decrease the both sympathetic outflow as well as parasympathetic outflow. That's why decrease in the blood pressure. So that's why they are used in the blood pressure treatment, right? Now anti-NM मतलब those drug which block the nicotinic NM receptor, means neuromuscular blockers. They are known as neuromuscular blockers. So nicotinic NM blocker means neuromuscular blockers. They are known as neuromuscular blockers. So neuromuscular blockers कहाँ पे यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्म. दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल मसल स्पाज्म. दे आर नोन एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. उसके ऊपर कल अपन पूरा एक चैप्टर देखेंगे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, राइट? इन दैट देयर आर टू टाइप, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और आल्सो नोन एज डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ ब्लॉकर एंड कॉम्पिटिटिव और नॉन डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ ब्लॉकर्स. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. तो नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स मतलब क्या कि दे विल ब्लॉक द एसिटिलकोलिन एट NM रिसेप्टर नॉन कॉम्पिटिटिवली. सो एग्जांपल इज सक्सिनिलकोलिन एंड है ना डिमेमिथोनियम, डेकामिथोनियम एंड सक्सिनिलकोलिन. दे आर द नॉन कॉम्पिटिटिव डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ये क्लासिफिकेशन होगा. सक्सिनिलकोलिन and decamethonium, they are the non-competitive depolarizing type of neuromuscular blocker. तो ये क्या है, स्केलेटल मसल को रिलैक्स करते हैं. जैसे न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या फिर सेरेब्रल पाल्सी है या फिर अटेक्सिया है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा मसल जो है ना, स्केलेटल मसल अकड़ जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं ना. जैसे मेरा अभी आपका भी फ्लेक्सिबल रहता है. You can raise your hand, you can fold your hand, so that has some sort of flexibility, है ना, जो जिसमें spasticity आता है. So the term is a spastic muscle. Spasticity of muscle means the muscle is rigid, the muscle is flaccid, muscle is a spastic, so it is not a elastic. So spastic मतलब क्या है ना, spasticity and elasticity. Elastic मतलब क्या, खींचा तो खींच जाएगा, छोड़ा तो फिर से सिकुड़ जाएगा. स्पास्टिक मतलब क्या है कि वो खींच नहीं सकता, राइट? सो टू डिक्रीज द मसल स्पास्टिसिटी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर यूज्ड और skeletal muscle relaxants are used. There are two type, non competitive depolarizing type of drug known as succinylcholine and decamethonium, and second one is a competitive or non depolarizing blockers. उसमें आता है तीन टाइप, long acting, intermediate acting and short acting. So in the long acting you have D-tuberculin and pancuronium. So D-tuberculin and pancuronium. So they are the curare alkaloids. पहला तो curare alkaloid D-tuberculin, दूसरा synthetic derivative. So first one is a natural alkaloid D-tuberculin from curare alkaloid, and second one is a pancuronium, that is a synthetic derivative. Okay? Then intermediate acting, so vacronium, vacronium and atracurium. Then short acting में आता है mivacurium and rapacuronium. So these are mostly used in the anesthesia. So ये जो है ना intermediate and short acting, they are mostly used in the anesthesia. Why? To achieve the adequate muscle relaxation. है ना, ये जो intermediate and short acting neuromuscular blockers है, they are used in the treatment of anesthesia. They are used in the they are used as a adjunct to the anesthesia. Adjunct क्यों? Because they causes the adequate muscle relaxation during the anesthesia for the surgery, है ना. तो ये ड्रग अपन कल देखने वाले. तो today we will see only anticholinergic drug or muscarinic blockers. So again you see muscarinic blockers. Question आता है classification के ऊपर. That's why we are taking the classification 2-3 times. So anticholinergics or muscarinic blocker,
सो एट्रोपिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, सो नेचुरल अल्कोलाइड में क्या आएगा, एट्रोपिन आएगा, हायोसिन आएगा, हायोसिन इज आल्सो नोन एज स्कोपोलामाइन, हायोसिन इज आल्सो नोन एज स्कोपोलामाइन। ये कहाँ से आता है, बेलाडोना। तो एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन दे आर natural alkaloids obtained from belladonna, we have seen in the cognosine, right? So atropine, hyoscines, out of that atropine is a racemic mixture, remember it is a racemic mixture. Then semi-synthetic derivative of atropine, so atropine methonitrate, then homotropine, then hyoscine butyl bromide, ipratropium bromide and tiotropium bromide. Yeah. These are the synthetic semi-synthetic derivative. Now third a synthetic compound, synthetic derivative, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द यूज दे आर फर्दर क्लासिफाइड। so for example, drug which are used for their anti-secretory and anti-spasmodic effect, so example is the first class is quaternary ammonium compound, उसमें प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीपोनियम है ना, क्लिंडिनियम, पाइपेंजोलेट मिथाइल ब्रोमाइड, देन आइसोप्रोपामाइड एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। तो आउट ऑफ दैट ग्लाइकोपाइरोलेट इज यूज्ड इन द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, याद रखना है। प्रोपेंथेलिन इज एंटी सिक्रेटरी, ठीक है। देन इसमें टर्शरी अमाइंस भी है सेकंड क्लास, सो इन द डाइसाइक्लोमाइन आपको बोला है साइक्लोपाम टैबलेट, इट इज एंटी स्पाज्मोडिक, देन वेलाथामाइड एंड पायरेंजेपिन, पायरेंजेपिन इज एंटी सिक्रेटरी अगेन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अ माइड्रियाटिक, दोज used for a mydriatic purpose, cyclopentolate is there and tropicamide is there, those which are vesicoselective, blood vessel के selective, ऑक्सीपिटोनिन, डायोक्सेट एंड टोल्टोरेडिन। एंटी पार्किंसन में है ना ट्राइफेनिडेक्सिलिल, उसको बोलते हैं अपनी बेंजेक्सोल, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, एंड प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन। वी हैव टेकन द क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कर्निक एंटागोनिस्ट एज वेल एज निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, राइट। क्लासिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है and we have taken the both anti-muscarinic drug, anti-nicotinic drugs, right? So we'll see the details of anti-muscarinic drugs, and tomorrow we'll see the details of anti-nicotinic drugs. And because anti-nicotinic drugs, so those drugs which block the nicotinic receptor, they are useful as a skeletal muscle relaxant. तो पूरा चैप्टर है आपको skeletal muscle relaxant, that is nothing but the neuromuscular blockers. So that will be discussed tomorrow in a separate lecture. So today we'll discuss only muscarinic antagonist, right? Muscarinic antagonist. So let's see we have seen the classification now. Muscarinic blocking agent, muscarinic receptor blocking drug कौन से है, alkaloids जैसे atropine and hyoscine, so both are obtained from Atropa belladonna. So alkaloids from Atropa belladonna, they will block the muscarinic receptor, right? So atropine is a prototype of this class, so actions of atropine will be discussed in the detail and remaining will be discussed important points of remaining drug. तो यहाँ पे atropine का pharmacology we are going to discuss in the detail. The pharmacology of atropine we are going to discuss the details, and remaining drugs, so that will be discussed only important additional points, right? As atropine is a prototype of this class, so atropine prototype होता है इसलिए, right? So two important alkaloids, that is atropine and hyoscine, okay? So two important alkaloids of belladonna, that is atropine. तो atropine and atropine क्या है, atropine is a racemic mixture। देखो atropine is a racemic mixture, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसके ऊपर। atropine is a racemic mixture of, है ना, L hyoscine, so इसमें DL hyoscine होता है, that's why atropine is a racemic mixture, है ना। and second alkaloid is scopolamine. So atropine and scopolamine, they are the two alkaloids present in the belladonna. Scopolamine is also known as a hyoscine. Scopolamine is also known as a hyoscine. And atropine is a L-hyoscyamine. Okay, that's me picture of L-hyoscyamine. So atropine and synthetic drugs are mostly commonly used as a anticholinergics. So mechanism of action क्या है? They will block the muscarinic receptor. So atropine and related drugs, they will competitively block the muscarinic receptor. Blockage can be reversed by increasing the amount of acetylcholine, मतलब they are the competitive antagonist to muscarinic receptor. They will increase the cyclic GMP level in the cell, and that result in the negative effect. Right? So these drugs that will not interfere with the acetylcholine release.
ये जो ड्रग है they will not interfere with the release of acetylcholine, but what they will do, they will block the receptor. So salivary and bronchial secretions they are extremely sensitive. तो इनके लिए atropine and other drugs जो है mostly salivary and bronchial secretion they are extremely sensitive, while other smooth muscles of GIT, smooth muscles of GIT, eyes and heart they are less affected. मतलब मोस्टली ये एक्शंस एंटीमस्कर्निक कहाँ पे रहेंगे ज़्यादा, सलाइवरी ग्लैंड्स में, ब्रोंकियल सिक्रेशन में, या फिर बाकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन में, जीआईटी के ऊपर, हार्ट के ऊपर एंड आइज के ऊपर. ठीक है, तो दैट्स वाई फार्माकोलॉजी ऑफ एट्रोपिन ये इनके ही एक्शंस है. और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एट्रोपिन, तो एट्रोपिन क्या है, सीनस स्टिमुलेंट है ना, एंड स्कोपोलामाइन. स्कोपोलामाइन क्या है, सीनस डिप्रेसेंट. तो स्कोपोलामाइन इज आल्सो एंटीमस्कर्निक, एट्रोपिन इज आल्सो एंटीमस्कर्निक, बट देयर इज डिफरेंस. एक ही डिफरेंस है कि एट्रोपिन क्या है, सीनस स्टिमुलेंट है, तो एट्रोपिन कॉजेज सीनस स्टिमुलेशन while scopolamine causes the sinus depression. Other actions are similar, so that's why we are going to discuss only actions of atropine, similar actions of scopolamine. ठीक है, तो पहला है secretion के ऊपर. So endocrine secretion, sorry exocrine secretion. What is the action of atropine and other muscarinic blockers on a secretions? तो acetylcholine क्या करता है? So acetylcholine will increase the all glandular secretion. जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से उनके सिक्रेशन एसिटिलकोलिन बढ़ता है. तो एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक. सो व्हाट एट्रोपिन विल डू, सो एट्रोपिन विल डिक्रीज और रिड्यूस ऑल सिक्रेशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. बस एट्रोपिन सभी सिक्रेशन कम करता है ना, सलाइवरी सिक्रेशन कम करेगा, लैक्रिमल सिक्रेशन कम करेगा, है ना, जीआईटी में सिक्रेशन कम करेगा. जितने भी सिक्रेशंस है आपके ग्लैंडुलर सिक्रेशन जो है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन जो है सो पूरा कम कर देगा. दैट्स वाई मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज नथिंग बट द ड्राइनेस ऑफ माउथ. क्योंकि एसिटिलकोलिन क्या करता है, एसिटिलकोलिन सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ाता है, तो एसिटिलकोलिन विल डिक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन. बट व्हाट इज एट्रोपिन, एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक, इट विल डिक्रीज द सलाइवा, सलाइवरी सिक्रेशन विल बी डिक्रीज्ड बाय एट्रोपिन. दैट्स वाई ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन द swallowing, निगलने के लिए तकलीफ होगी. So again acetylcholine increases the gastric acid, gastric secretion, and atropine is anti-muscarinic, so it will cause decrease in the gastric acid. And okay, so that's why atropine क्या करता है, देखो यार, atropine decreases the gastric secretion, so decreases the volume of and acidity of gastric juice, so decrease the gastric juice production, and that's why atropine can be used as a anti-ulcer, है ना. So atropine can be used as anti-ulcer, atropine and other drug. That's why there is one category in the anti-ulcer drug. जब anti-ulcer drug देखेंगे उसमें एक anticholinergic drugs, pyrazapine, propenthalin, telenzacapine, atropine, ये सब उसमें आता है. So acetylcholine सभी सिक्रेशन बढ़ता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, एट्रोपिन सभी कम कर दे. ठीक है. Now inhibition of sweat gland activity is also there. So atropine inhibit the sweat gland activity. क्यों? Because sweat gland के ऊपर है ना, sweat gland का भी एक्टिविटी कम कर देगा. It is very less effect on a pancreatic and intestinal secretion. So atropine will have very less effect on a intestinal secretion and pancreatic secretion. Right? यहाँ पे याद रखना है. Atropine decreases the lacrimal secretion. Atropine decreases the salivary secretion, causes the dryness of mouth. Atropine decreases the gastric acid secretion, the volume of gastric juice, total acidity of gastric acid, so they can be used in the gastric ulcer. Okay. So reduction in the secretion of mouth, nose, pharynx and bronchi, very important. The bronchial secretion भी कम कर देगा. Bronchus में जो mucus secretion होता है उसको भी कम कर देगा. Acetylcholine will increase the secretion. Acetylcholine will increase the mouth secretion, nose secretion, pharynx, larynx and bronchi. So acetylcholine basically promote the asthmatic symptoms. तो atropine क्या करेगा, atropine will act as an anti-asthmatic. It will decrease the bronchial secretion and it will produce a viscid secretions, right? So that's why है ना, tiotropium bromide, ipratropium bromide derivatives are there. So tiotropium atropine का ही derivative, tiotropium bromide,
है ना, उसका डेरिवेटिव. सो दैट इज यूज्ड इन द अस्थमा. ठीक है. नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एट्रोपिन ऑन अ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी के ऊपर क्या एक्शंस है. व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एट्रोपिन ऑन अ स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी. पहले सबसे पहले आपने देखा है व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलिन ऑन द स्मूथ मसल. तो एसिटिलकोलिन क्या करता है. एसिटिलकोलिन विल इंक्रीज द GIT peristalsis. How acetylcholine will act on muscarinic receptor, which will stimulate the contraction of smooth muscles of GIT and it will relax the sphincter so that peristalsis will be there. है ना. तो ज्यादा एसिटिलकोलिन अगर आपका हो गया तो आपको डायरिया होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस. So what is the effect of acetylcholine? So it will contract the smooth muscle, relax the sphincter. So now atropine is a anticholinergic. It is a anti-muscarinic. So opposite effect. What will it do? It will relax the smooth muscle and constrict the sphincter. मतलब क्या? Anticholinergic drug के action similar to the adrenergic drugs. Anticholinergic drug के action जो है they are similar to noradrenaline. Right? So reduction in the tone and motility. Reduction in the tone and motility exerts antispasmodic effect and on a biliary tract also. Bile का जो tract है उसके ऊपर भी antispasmodic effect on a gall bladder and biliary tract. Urinary tract के ऊपर भी क्या है. On a urinary tract reduces the urethral peristalsis and causes the urine retention. क्या करेगा. यूरिन रिटेंशन करेगा. क्योंकि क्या करता है. इट इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, है ना. सो इट विल रिलैक्स द यूरिनरी रेट्रोसर मसल एंड कंस्ट्रिक्ट द स्फिंक्टर. सो यूरिन रिटेंशन. और यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे फिर इसके. तो पहला तो हो गया आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ. मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसका ड्राइनेस ऑफ माउथ. राइट. एंड सेकंड होता है आपका सेकंड होता है यूरिन रिटेंशन. तो first most common adverse effect of atropine is nothing but the dryness of mouth, and second most common is nothing but the urine retention. तो देखो ये दो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. GPAT 2021 में क्वेश्चन आ चुका है. मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. फर्स्ट इज अ ड्राइनेस ऑफ माउथ जो पहले स्लाइड में देखा था आपने. सेकंड वन इज यूरिन रिटेंशन, है ना. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन आईज. आईज के ऊपर क्या एक्शन है एट्रोपिन के, तो आपको मालूम है. तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन ऑन आईज. तो एसिटिलकोलिन ऑन आईज, है ना, विल प्रोड्यूस सम माइड्रियासिस, है ना. सो सॉरी, एसिटिलकोलिन ऑन आईज विल प्रोड्यूस सम मायोसिस, है ना, and vision for near distance. So it is an anticholinergic drug. Atropine क्या है. मस्कनिक ब्लॉकर है. तो एट्रोपिन क्या करेगा. अगर एसिटिलकोलिन मायोसिस करता है तो एट्रोपिन क्या करेगा. ऑब्वियसली माइड्रियासिस. तो एट्रोपिन कॉजेज द माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया. दैट इज नोन एज स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन. तो एट्रोपिन क्या करता है. माइड्रियासिस एंड cycloplegia because of the blocking of cholinergic nerve to the smooth muscle of the sphincter of iris. This blockage leads to paralysis of ciliary muscle of iris, and that produces the tightening of suspensory ligament on the lens, resulting into flattening of lens, flat lens, which increases the focal length of eye. So vision is fixed for far vision. So vision is fixed for far vision. जैसे आपका एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन क्या करता है. माइड्रियासिस करता है. विजन क्या करता है. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फिक्स करता है. सेम थिंग एट्रोपिन इज डूइंग. तो एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक. सो एसिटिलकोलिन मायोसिस करता है, ये माइड्रियासिस करेगा. एसिटिलकोलिन स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन करता है, ये साइक्लोप्लेजिया करेगा. So vision is fixed for far distance and one can see objects which are at a far distance, but one cannot see the objects which are at a near distance. So atropine treatment result in the mydriasis, cycloplegia. So one can see the objects which are near
distance but cannot see, okay, which one can see the object which are at a far distance. जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो दिखेंगे आपको, नियर नजदीक के ऑब्जेक्ट दिखेंगे नहीं. Because of the paralysis of pupil sphincter, one cannot constrict the pupil in response to the light. This is known as the paralysis of accommodation. This is known as the paralysis of accommodation or cycloplegia. This is known as the paralysis of accommodation and cycloplegia. इसके ऊपर बहुत बार 2-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. सो व्हाट, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, व्हाट is the effect of atropine on the eyes. So what is the effect of atropine on the eyes? So atropine क्या करेगा, so atropine will produce mydriasis and cycloplegia. Cycloplegia and mydriasis मतलब क्या करता है, तो atropine ना क्या करता है, atropine देखो यहाँ पे वो जो दिखा था मैंने पे. तो what is atropine action on eyes, important एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए 2 बार ले रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे. देखो है ना एट्रोपिन, तो एसिटिलकोलिन क्या करता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, तो एसिटिलकोलिन विल कॉज मायोसिस एंड स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन. एसिटिलकोलिन क्या करता है, मायोसिस एंड स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन. तो एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, so it will produce mydriasis, so increase in the pupil size, and cycloplegia. Cycloplegia क्या होता है, बताओ. तो because of the blocking of muscarinic receptor supplied to smooth muscles of sphincters of iris, तो muscarinic receptor को ब्लॉक करता है iris के, and that causes the paralysis of ciliary muscle, which leads to tightening of suspensory ligament and result into flattening of lens. तो लेंस है फ्लैट हो जाता है. तो एसिटिलकोलिन क्या करता है कि लेंस जो है वो सर्कुलर होता है एसिटिलकोलिन में. यहाँ पे माइड्रियासिस की वजह से लेंस जो फ्लैट हो जाता है, एंड दैट consequently result in the increase in the focal length. So vision is fixed for far vision. So you can see the object which are at a far distance, but you cannot see, but one cannot see the object which are at a near distance. Because of the paralysis of pupil sphincter, one cannot constrict the pupil in response to the bright light. यहाँ पे पैरालिसिस करता है इसका, किसका, स्फिंक्टर पिपिल मसल जो है पैरालिसिस करता है. दैट्स व्हाई वन कैन नॉट कंस्ट्रिक्ट द पिपिल अपॉन द सडन फॉल ऑफ लाइट. जैसे होता है, मान लीजिए है ना, डॉक्टर ने अगर बैटरी का लाइट आपके आईज के ऊपर मार दिया तो आप क्या करते हो, आईज को कंस्ट्रिक्ट करते हो, आपका पिन पॉइंट होता है ना. तो एट्रोपिन देने के बाद में, बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ पिपिल स्फिंक्टर मसल, so one cannot constrict the pupil in response to the bright light, and this phenomenon is known as a paralysis of accommodation. This is known as a paralysis of accommodation and cycloplegia. This is known as a paralysis of accommodation and cycloplegia. So this question has already asked it 2-3 times in the GPAT. What is the action of muscarinic, what is the action of atropine on the eyes? So atropine produces the paralysis of accommodation, also known as cycloplegia. It causes the mydriasis, so distance is fixed for far vision. These are the actions of atropine on the eyes. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now next, what are the actions of atropine on the cardiovascular system? पहले तो याद करो कि what are the actions of acetylcholine on the cardiovascular system. तो acetylcholine क्या करता है, it will depress the heart. Acetylcholine will suppress the heart, decrease the SI node activity, decrease the myocardial contractility, decreases the blood pressure. Now atropine is an anti-muscarinic or anticholinergic. So what will it do? It will do opposite. So initially atropine causes the bradycardia due to stimulation of medullary wave nuclei. तो initially acetylcholine की जैसे bradycardia करता है, but later it produces the tachycardia. Later it produces the tachycardia because of the muscarinic blockage in the SI node. So acetylcholine by stimulating the SI node, the muscarinic receptor in the SI node, acetylcholine by stimulating the muscarinic receptor in the SI node, M1 receptor, it causes the bradycardia. Now acetylcholine causes the bradycardia, है ना, by stimulating the M1 receptor.
नाउ एट्रोपिन क्या करता है, यमोन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, सो इट प्रोड्यूसेस द टैकिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया मतलब क्या है, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, है ना, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, आपका हार्ट का रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, डिक्रीज इन द हार्ट रेट। टैकिकार्डिया मीन्स व्हाट, टैकिकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन द हार्ट रेट, तो जो हार्ट है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, टैकिकार्डिया। So atropine causes the tachycardia because of the blockage of SA node M1 receptor. Atropine completely counters the peripheral vasodilation and hypotension produced by cholinergic drugs. So that's why acetylcholine और cholinergic drug का antidote क्या होता है, atropine, right? So cholinergic drug का poisoning हो गया या फिर acetylcholine का activity बढ़ गया, atropine देते। Atropine is a muscarinic blocker, right? So I think you might have understood. Next is what is the action of atropine on a on a CNS? CNS के ऊपर क्या एक्शन है atropine की, तो acetylcholine के क्या एक्शन है CNS के ऊपर? So atropine is a medullary stimulant, medulla oblongata को स्टिमुलेट करता है, तो atropine is a medullary stimulant and it can produce emesis, ये वोमिटिंग करा सकता है आपको। Atropine can cause emesis, CNS stimulant, medullary stimulant and it can cause emesis, मतलब वोमिटिंग कर सकता है। It causes stimulation of medullary vagal nuclei and at a higher centers because increase in the, है ना, because of that increase in the rate of and depth of respiration. It is a CNS stimulant and increases the rate and depth of respiration. Atropine in moderate doses control the tremors and rigidity in the Parkinson patient. That's why atropine कहाँ पे यूज होता है? Atropine is also used in the Parkinsonism because it can control the tremors and rigidity. जो मसल रिजिड हो चुका है वो फ्लेक्सिबल बनता है, ट्रिमर्स जो बड़े हैं वो कम होते हैं। It stimulates the vagal and respiratory as well as vasomotor center and decreases the vestibular excitation, and it has a anti-motion sickness activity. Anti-motion sickness मतलब emesis due to the vestibular disturbances। जैसे मान लीजिए आप, है ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो रेड बस है, रेड बस में बैठे हो और जा रहे हो और आपके गांव को जा रहे हो, गांव में क्या होता है कि रास्ता बहुत ही खराब होता है और आप बैठे हो बस में, कंटिन्यूसली आपका डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस, कंटिन्यूसली आपका हेड का शेकिंग हो रहा है ना, आपका हेड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि रास्ता खराब है ना। तो क्या होता है, सो ड्यू टू द कंटिन्यूस शेकिंग ऑफ योर हेड, सो योर बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन द पोस्चर, आपको बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ बैलेंसिंग सेंटर इन द ब्रेन। ब्रेन का बैलेंसिंग सेंटर क्या हो गया, एक्टिव हो गया है, क्योंकि आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गड्ढे रास्ते में बहुत सारी गाड़ी जा रही है ना, तो डिस्टर्ब हो रहा है, तो योर बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन द पोस्चर, बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ बैलेंसिंग सेंटर। जैसे बैलेंसिंग सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है तो नियर बाय टू द बैलेंसिंग सेंटर, in a medulla oblongata there is a vomiting center, and due to continuous stimulation of balancing center, so your vomiting center gets stimulated and you get vomiting। तो आप बोलते हो बस लागली, मला बस लागते म्हणजे काय, बसमध्ये मला उलट्या होतात, का होतात? ड्यू टू दॅट वेस्टिब्युलर डिस्टर्बन्सेस। सो atropine and scopolamine both depresses this vestibular center, and that will depress the vestibular center, that result into the anti-motion sickness activity। तो मोशन सिकनेस मतलब क्या है कि जब बस में जाते हो, आप कार में जाते हो, ड्यू टू कंटिन्यूस शेकिंग ऑफ योर हेड, your balancing center is stimulated, nearby to the balancing center there is a vomiting center and that is stimulated, and उसकी वजह से आपको vomiting होता है।
तो उसके लिए आपको ये एंटी मोशन सिकनेस दवाई दिया जाता है. इन दैट एट्रोपिन इज देयर, स्कोपोलामाइन इज देयर, उसके प्रोमेथाजिन इज देयर. So they will depress your vestibular system and prevent the vomiting. So in contrast to atropine, atropine क्या है, सीन स्टिमुलेंट है. In contrast to the atropine, scopolamine depresses the reticular system, reticular activity system of brain, and usually produces the euphoria, drowsiness, amnesia. So scopolamine produces euphoria, drowsiness, amnesia, and diminishes dreamless sleep. Dreamless sleep, reduction in the rapid eye movement. Atropine causes the increase in the body temperature because of the inhibition of sweat gland activity. Normally क्या होता है, जब आपको टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाता है बाहर से, आपके स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वाटर लॉस करते हैं. तो atropine increases the body temperature because of the inhibition of sweat gland that is inhibited by stimulation. Atropine increases the body temperature by inhibition of sweat gland as well as increases the body temperature by stimulating the temperature regulating center. एक तो ये at one side atropine inhibit the sweat gland activity, that's why increase the body temperature. At the other hand, atropine stimulate your temperature regulating center in the brain that also contribute the increase in the body temperature. ठीक है, तो atropine increases the body temperature by two mechanism. It has a mild anesthetic action on a cornea. इनका थोड़ा सा anesthetic action भी है on cornea. Okay? So these are the actions of atropine on CNS. नेक्स्ट होता है ADME, absorption distribution metabolism elimination. Absorption distribution metabolism and elimination. So it is a well absorbed from GI tract. It is metabolized in the liver. Scopolamine is mostly metabolized as compared to atropine. And ये दोनों भी presence of atropine stress, कुछ people में क्या है, कुछ लोगों में प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एट्रोपिन स्ट्रेस, कुछ भी लोगों में ये एंजाइम होता है एट्रोपिन स्ट्रेस, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल सम रैबिट हैव एट्रोपिन स्ट्रेस टू डिटॉक्सिफाई एट्रोपिन मोर और रैपिडली. एट्रोपिन कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, एट्रोपिन कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इनके, देखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो सबसे पहला क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, difficulty in the swallowing, tachycardia, fever, constipation, blurring of vision, retention of urine retention, and they can precipitate a glaucoma in an elderly patient. और इसके ऊपर GPAT 21 में क्वेश्चन आ चुका है. मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन द swallowing, टैक्यकार्डिया, फीवर, कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि एसिटिलकोलिन क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करता है, तो एट्रोपिन क्या करेगा, पेरिस्टाल्सिस कम करेगा. तो कॉन्स्टिपेशन है ना, एसिटिलकोलिन के इन्फ्लुएंस में यू आर एबल टू पास योर यूरिन, तो एट्रोपिन क्या करेगा, एंटीकोलिन के, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन. तो याद रखना है ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिन रिटेंशन, ये आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन व्हेन यू सी द सेम चैप्टर ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. वहाँ पे अपन देखेंगे ये एट्रोपिन होता है, ये हायोसाइमिन. नाउ एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग, क्यों होता है एट्रोपिन पॉइजनिंग, ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ धतूरा प्लांट, ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ बेलेडोना प्लांट. स्कोपोलामाइन इज अ मोर टॉक्सिक देन एट्रोपिन, एट्रोपिन से ज्यादा स्कोपोलामाइन टॉक्सिक होता है. स्कोपोलामाइन इज अ मोर टॉक्सिक देन एट्रोपिन. Toxicity of है ना, cause of toxicity is due to the accidental ingestion of धतूरा seeds और है ना, या फिर है ना. symptoms of atropine poisoning क्या है, symptoms due to muscarinic blockage क्या होगा, वही dryness of mouth, difficulty in the swallowing, intense thirst,
टैकिकार्डिया, पल्पिटेशन, फ्लशिंग, hyperpyrexia मतलब increase in the body temperature, inhibition due to inhibition of sodium, dilation of pupil, mydriasis, blurring of vision, photophobia, urinary urgency, difficulty in the micturition. Okay, these are the due to the muscarinic effect. Central effect क्या होगा? Excitement, restlessness, motor incoordination, slurring of speech, and disturbance in the memory, confusion, hallucination, mania, delirium भी हो सकता है. Okay. नोशिया, वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, है ना. सीवियर पॉइजनिंग ज़्यादा अगर होता है तो सीवियर पॉइजनिंग रिजल्ट इन द डिप्रेशन ऑफ वासोमोटर सेंटर, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस व्हिच इज मोर फ्रीक्वेंट विद द स्कोपोलामाइन. तो अगर ड्रग कैटेगरी जैसे ये ड्रग होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट बिकॉज दे आर आल्सो हैविंग एंटी-मस्कारिक एक्टिविटी. Thiazines, antipsychotic, antihistaminic. They also possess the muscarinic blocking activity and also can increase the symptoms of atropine poisoning. So atropine poisoning का treatment क्या है? Very important. So universal antidote to prevent the unabsorbed poisoning. Universal antidote to prevent the absorption of alkaloids. Then CNS stimulant है तो CNS effect can be reversed by फाइसोस्टिग्माइन. याद रखना है एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? फाइसोस्टिग्माइन. एंड फाइसोस्टिग्माइन का एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन. सो एट्रोपिन इज एंटीडोट फॉर cholinergic drugs and for atropine poisoning physostigmine is a drug, right? Next we'll see synthetic and synthetic and semi-synthetic drugs. Synthetic and semi-synthetic atropine substitute. Chemically, they are the quaternary ammonium compound. They are less absorbed orally and they do not cross the blood-brain barrier. They are ठीक है, ये अपन कल देखेंगे. थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आज खांसी लग रहा है ना. सो टुमारो विल सी द एंटी मस्कर्निक रिमेनिंग. आई फाइनली पहना जस्ट वेट फॉर 2 minutes. I will drink some little water and then we'll continue to the 8:30. एवढे काम आहे कुठलं आहे ना. तुम्हें टोकरा लेते. So synthetic and semi-synthetic derivative of atropine. Chemically, they are mostly quaternary ammonium compound. They are less absorbed orally, do not cross the blood-brain barrier, and they are non-selective muscarinic and nicotinic blockers. Tertiary amine जो है, they can absorb orally and can cross the blood-brain barrier. जो quaternary ammonium compound है, they are not orally absorbed, they will not cross BBB. But जो tertiary है, they are orally absorbed, they can cross BBB, and they are selective to the nicotinic receptor. They are classified as, जैसे अपन ने देखा है ऑलरेडी, mydriatic and cycloplegic, जैसे atropine, homotropine, ecotropine, cyclopentolate, tropicamide, antispasmodic and anti-secretory. Atropine है ना, metascopoline, methamphetamine, propanthelin. Those used in the Parkinson disease, triaxylphendyl, procyclidine and bipyridine. Those which are used in the bronchial asthma, ipratropium bromide. It is a drug of choice. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now atropine mononitrate क्या है? Again it is used as a mydriatic and to treat the congenital hypertrophic pyloric stenosis. ये क्या होता है? congenital hypertrophic pyloric stenosis. मतलब क्या है? कुछ कुछ बच्चों में ड्यू टू जेनेटिक उनके पेट में क्या होता है, उनके हाथ में क्या है
ये हाथ में गार्ड बन जाती है या फिर उनका हाथ में स्टेनोसिस होता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ योर स्टमक is closed due to genetic problem. So to open that atropine method nitrate is used. Methacopolamine इसमें कोई सेंट्रल इफेक्ट नहीं होता है। सो डिवाइड ऑफ सेंट्रल इफेक्ट ऑफ स्कोपोलामाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल कोलिक, है ना, जो किडनी में अगर आपका स्पाज्म होता है, रेनल कोलिक मतलब स्पाज्म ऑफ यूरेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन एसोसिएटेड विद सिस्टाइसिस। मतलब क्या कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया यूरेथ्रल इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस हो गया, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बढ़ जाता है ना। सिस्टाइसिस अगर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बढ़ जाता है। तो इन दैट केस दैट ड्रग इज यूज्ड, कौन सा, मिथाइल स्कोपोलामाइन, राइट। देन मिथानथैलिन, सो मिथानथैलिन क्या है, इट इज अ एंटी muscarinic drug. Again it has a high ratio to the ganglionic blocking to the muscarinic blocking. मतलब मिथानथैलिन गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग मस्कर्निक ब्लॉकिंग का रेशियो जो है उसका ज्यादा है ना। मतलब क्या ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ज्यादा करता है मस्कर्निक ब्लॉकिंग के कंपैरिजन में। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन एट्रोपिन, एट्रोपिन से ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग है। साइड इफेक्ट्स आर, है ना, पोस्चरल हाइपोटेंशन, इम्पोर्टेंस, यूरिन रिटेंशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। ये एडवर्स इफेक्ट है उसके। नेक्स्ट इज नथिंग बट द प्रोपेनथैलिन, प्रोपेनथैलिन, कौन प्रोपेनथैलिन। देखो ये प्रोपेनथैलिन ऑक्सीब्यूटेनिन, है ना, ऑक्सीफोनियम, डाइसाइक्लोमाइन, पायरेंजेपिन, दीज आर द। तो पहला है आपका प्रोपेनथैलिन, तो इट इज रिलेटेड टू मिथानथैलिन, सेम ड्रग है बट मोर पोटेंट टू द गैंग्लियोनिक एंड मस्कर्निक ब्लॉकिंग एक्शन। तो यूज्ड एज अ मसल रिलैक्सेंट इन केस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना, आईबीडी में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो 2-3 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा और उसके बाद में 2-4 दिन डायरिया हो जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन डायरिया। सो अल्टरनेट एपिसोड्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, दैट इज नोन एज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो प्रोपेनथैलिन इज यूज्ड इन द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टू रिलीव द पेन ऑफ diverticularis in treatment of diarrhea also. It is a popular anticholinergic drug for gastric and peptic ulcer in a gastritis. पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है, गैस्ट्राइटिस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है ऑक्सीफोनियम, ऑक्सीफेनोनियम, ऑक्सीफेनोनियम। तो अगेन इट इज अ पोटेंट एंटी स्मॉल has a high ratio of ganglionic blocking to the muscarinic activity. नेक्स्ट होता है पायरेंजेपिन, तो अगेन ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, मस्कर्निक ब्लॉकर है एंड यूज्ड मोस्टली टू इट्स एंटी अल्सर एक्टिविटी, एंटी गैस्ट्रिक एक्टिविटी। तो मस्कर्निक ब्लॉकर है, डिक्रीजेस द एसिड फॉर्मेशन। तो ये इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द हाइपर एसिडिटी इन द ड्यूडेनल अल्सर्स। नेक्स्ट होता है आपका डाइसाइक्लोमाइन, ये तो एंटी स्मॉल बॉडी। तो टर्शरी अमाइन, है ना, and also direct muscle relaxant property used in the dysmenorrhea as an antispasmodic and it will not have adverse effect of atropine. atropine के adverse effect इसको नहीं है ना। डाइसाइक्लोमाइन, इसका एक टैबलेट आता है देखो साइक्लोपाम नाम का, इंडोको रेमेडीज का साइक्लोपाम नाम का टैबलेट आता है। इंडोको रेमेडीज क्या है, कंपनी है उसका, साइक्लोपाम टैबलेट, दैट इज अ डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो जो गर्ल्स में जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है डिस्मेनोरिया, इन दैट स्पाज्म जो होता है, इन दैट इट इज यूज्ड डाइसाइक्लोमाइन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है फ्लेवोक्सेट, है ना, फ्लेवोक्सेट क्या है, टर्शरी अमाइन, लोकल एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक एंड स्लाइट एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। इसको क्या है, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है
एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है एंड थोड़ा बहुत एंटी मस्कर्निक प्रॉपर्टी। इट हैज अ डायरेक्ट रिलैक्सेशन एक्शन ऑन द वॉल ऑफ स्मूथ मसल। तो ये यूज किया जाता है किसमें, यूज टू ट्रीट द एन्यूरिया नेचुरो एन्यूरेसिस सुप्राभविक मैन इन द एंड यूरिनरी अर्जेंसी। मतलब क्या है, इट इज यूज टू ट्रीट द एन्यूरिया, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू पास योर यूरिन दैट इज नोन एज अ एन्यूरिया। अगर आप आपका यूरिन पास नहीं कर रहे तो उसको बोलेंगे एन्यूरिया। तो नेचुरल एन्यूरेसिस है ना, सॉरी ऑल्सो ट्रीट द used to treat the anuria in the nocturnal enuresis suprapubic man and then urinary urgency frequency associated with the cystitis। अगर आपको यूरेथ्राइटिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सिस्टाइटिस, अगर वुमेन्स में सिस्टाइटिस होता है ना, मेंस में उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, वुमेन्स में उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम, सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस, ड्यू टू दैट देयर इज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप ज़्यादा यूरिन को जाएंगे। तो टू ट्रीट द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रिलेटेड टू सिस्टाइटिस, फ्लेवोक्सेट, देन ऑक्सीब्यूटिनिन। तो ऑक्सीब्यूटिनिन क्या है, अगेन एंटी मस्कर्निक एंड डायरेक्ट एज एंटी स्पाज्मेटिक इफेक्ट, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी है एंड local anesthetic to the urinary bladder used in the treatment of urinary urgency, urge of incontinence है ना, मतलब जिसको ज़्यादा यूरिनरी अर्जेंसी है, ज़्यादा यूरिन को जाता है, ठीक है ना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। टू आल्सो यूज्ड इन द स्पाइना बाइफिडा एंड नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब क्या, बेड वेटिंग। बच्चे क्या करते हैं, नींद में अपना कार्यक्रम कर देते हैं, बेड को वेट कर देते हैं। तो बेड वेटिंग इज नोन एज अ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। रात में बेड के ऊपर सुसु कर देना, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो उसमें ये ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट दोनों भी यूज किए दोनों भी यूज करते हैं, फ्लेवोक्सेट, ऑक्सीब्यूटिनिन। नेक्स्ट वन इज अ टोल्टोरिडीन एंड फेसोटोरिडीन। तो फेसोटोरिडीन क्या है, फेसोटोरिडीन इज अ प्रोड्रग ऑफ टोल्टोरिडीन। मतलब क्या, फेसोटोरिडीन विल बी मेटाबोलाइज्ड इनटू टोल्टोरिडीन। They are the tertiary amines and they are specific for the M3 receptor, muscarinic 3 receptor, है ना। M3 कहाँ पे होता है, ये होता है आपका ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। has been used to treat the bladder detrusor instability in the treatment of urinary incontinence. Also it is converted to active metabolite with the same action. Tolterodine is converted to fesotoridine is converted to tolterodine. Drug therapy of overactive bladder syndrome. अगर normally you used to go for urination, you used to go for voiding, है ना, कितना है 5 to 6 बोलो 7 बोलो। तो अगर आप 5 से लेके 7 बार आप यूरिन के लिए जाते हो दिन में, दैट इज अ नॉर्मल। 5 to 7 एपिसोड्स ऑफ यूरिन पर डे इज अ नॉर्मल। अगर 5-7 बार आप एक नंबर के लिए जाते हो, है ना, दैट इज अ नॉर्मल। बट अगर आप 10 बार जा रहे हो, 12 बार जा रहे हो और उतना यूरिन नहीं कर रहे हो, सो जस्ट बाय पासिंग 10 ml 20 ml यूरिन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज इंक्रीज्ड, so you are suffering from overactive bladder, right? So drug therapy of overactive bladder, so newly approved drugs are there, so जैसे आपका solifenacin and darifenacin, so these are the newly approved drugs, solifenacin and darifenacin. They act via blocking of muscarinic receptor, anti-muscarinic receptor, used in the treatment of overactive bladder. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, solifenacin, darifenacin, they are the used in the treatment of overactive bladder. So solifenacin क्या है, it is the longest acting ऑक्सीब्यूटिनिन is the shortest acting from this class. तो ये क्या है, ये भी क्या है, M3 रिसेप्टर के ऊपर, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, like this. Solifenacin is a longer acting, oxybutynin is a shorter acting.
मीरा बैकग्राउंड, देखो मीरा बैकग्राउंड इज अ न्यूअर ड्रग अप्रूव्ड फॉर द ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम, इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द बीटा 3 रिसेप्टर। जैसे मैंने बोला था आपको मीरा बैकग्राउंड, ये क्या है, ये भी एक नया अप्रूव्ड ड्रग है फॉर द ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। नाउ इट इज अ बीटा 3 स्टिमुलेंट, सिलेक्टिव बीटा 3 स्टिमुलेंट इन द ब्लैडर। तो सोलिपिनेसिन क्या है, एंटी मस्कर्निक है, डेरिपिनेसिन एंटी मस्कर्निक है, ऑक्सीपिटिनिन, तो दे आर आल्सो यूज फॉर द ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। एंड ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिंपैथेटिक ड्रग है, दैट इज यूज्ड अगेन फॉर ओवरएक्टिव ब्लैडर, ठीक है। नाउ समरी ऑफ यूजेस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के यूजेस क्या होंगे, इसका समरी आपको इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। नाउ पहले यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो मस्कर्निक यूजेस क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग मतलब कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। सो ड्यू टू देयर मस्कर्निक एक्शन, जो एसिटिल कोलिन के जैसे ड्रग है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स की यूजेस क्या है, सो मस्कर्निक यूजेस है उनका, ड्यू टू मस्कर्निक एगोनिज्म दे आर यूज्ड इन द ग्लाउकोमा, जैसे पिलोकार्पिन, फार्मास्यूटिक्स, इकोथायोपेट, दे आर यूज्ड इन द ग्लाइकोमा, so they are the cholinomimetic drugs, है ना। now due to their, है ना, due to their muscarinic action they are used in the glaucoma, some of they are used in the है ना, है ना, Jorgen syndrome, Jorgen syndrome, yes silent होता है, Jorgen syndrome, so they are also used in Jorgen syndrome, pilocarpine and sevimilin, तो जॉर्जियन सिंड्रोम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लो। देन बिकॉज ऑफ देयर मस्कर्निक ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे आर आल्सो यूज्ड इन द अल्जाइमर डिसीज, सॉरी, ड्यू टू देयर सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट दे आर आल्सो यूज्ड इन द अल्जाइमर डिसीज। इसमें टैकरिन यूज होता है, डोनेपिजिल, रिवर्सिटिकमाइन, गैलेंटामाइन अपन देखा है। ड्यू टू देयर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, ड्यू टू देयर कोलिनोमाइमेटिक एक्टिविटी, cholinomimetic activity, they are also used in the post operative paralytic illness, है ना। तो post operative paralytic illness bithanacol and neostigmine are used, post operative urine retention में bithanacol, neostigmine are used, due to their muscarinic agonistic effect they are also used in the belladonna poisoning, and this pharmaceuticmine is a drug, and they are also used in the diagnosis of hyperbronchial hyperactivity, मिथाकोलिन। निकोटिनिक एगोनिस्टिक यूज क्या है, तो ड्यू टू देयर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, निकोटिनिक एक्शन में रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सन, तो मसल रिलैक्सन की वजह से अगर मसल बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है तो इन दैट केस नियोस्टिकमिन एंड पेरिडोस्टिकमिन दे आर यूज्ड टू reactivate the muscle. Because of their nicotinic action, they are also used in the myasthenia gravis. For diagnosis, intravenous is used. For treatment, neostigmine, pyridostigmine, ammonium is used. They are also used in the treatment of copra bite, neostigmine and pyridostigmine. ये है cholinomimetic drug की uses. We have already seen cholinomimetic. Today we have seen cholinolytic. Now है ना, ये cholinolytic मतलब पैरासिम्पैथोलाइटिक के यूज दो, पैरासिम्पैथोलाइटिक तो नॉन सिलेक्टिव मस्कर्निक एंटागोनिस्ट, वो है एट्रोपिन, आयोसिन, दे आर द नॉन सिलेक्टिव मस्कर्निक एंटागोनिस्ट। और सिलेक्टिव मस्कर्निक एंटागोनिस्ट देखो, सिलेक्टिव यमन ब्लॉकर, पायरेनजेपिन एंड टेलेंजेपिन, बोथ आर यूज्ड इन द अल्सर्स, इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। M1 रिसेप्टर ब्लॉकर, M2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन है, सिलेक्टिव M2 रिसेप्टर ब्लॉकर, सिलेक्टिव M2 रिसेप्टर ब्लॉकर ट्राइप्टामाइन, ट्रिप्टामाइन, ट्राइपिटामाइन, ट्राइपिट्रामाइन, सिलेक्टिव M2 ब्लॉकर ट्राइपिट्रामाइन, ट्राइपिट्रामाइन, सिलेक्टिव M3 ब्लॉकर डेरिफेनेसिन एंड सोलिफेनेसिन, याद रखना है क्वेश्चन। नाउ ड्रग्स व्हिच एक्ट बाय अदर मैकेनिज्म, तो कुछ ड्रग्स जो है इसे some drug will inhibit the choline uptake and inhibit the synthesis of acetylcholine, so hemocholinia, इसको भी अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोल सकते हैं। decreases the vascular uptake of acetylcholine, racemicol is also anticholinergic, decreases the release of acetylcholine by inhibiting calcium mediated exocytosis, botulinum toxin is also
एंटीकोलिनर्जिक. बोtulinum toxin तो क्या है? Botulinum toxin is also used as a muscle relaxant, skeletal muscle relaxant. So this will end your cholinergic system. So what we have seen? We have seen the atropine anticholinergic drugs, their synthetic derivative. Again we have summarized, we have revised the uses of cholinergic drug, anticholinergic drugs. So tomorrow we'll see antispasmodic or skeletal muscle relaxant. तो आज अपन ने देखा है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो टुमारो विल सी द muscle relaxant. ठीक है, तो दिस विल एंड योर चैप्टर, दिस विल एंड योर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक चैप्टर. तो कल अपन स्केलेटल मसल लेंगे, उसके बाद में ये ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस खत्म हो जाएगा. ठीक है.